Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students. As you know that we are discussing the paper of modern poetry, and in our today's lecture, we are going to discuss last unit, that is unit number 9, African American poets Claude, McKAY, and Langston Hughes. First of all, we will discuss Harlem Renaissance. The Harlem Renaissance was a great cultural and literary movement of African Americans. जो हार्लम Renaissance थी ये एक मूवमेंट थी, ये एक बहुत बड़ी कल्चरल और यानी सकाफती और जो अदबी तहरीक थी अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर में 20th सेंचुरी के इब्तदा में मेनली during the 1920s and 1930s. It started in Harlem. ये Harlem में start हुई, which is an area in New York City, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक एरिया है. ड्यूरिंग दिस टाइम अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन इन सब ने स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर आइडेंटिटी. उन्होंने अपनी शनाख्त के बारे में बताना शुरू किया था. कल्चर एंड स्ट्रगल्स थ्रू लिटरेचर, अदब के जरिए एंड आर्ट. द हार्लेम रीनेसांस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गेव अफ्रीकन अमेरिकन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, कि इसने अफ्रीकन और अमेरिकन को एक मजबूत इजहार का मौका दिया एंड हेल्प देम टू शो देयर टैलेंट, कि वो अपना टैलेंट शो करें टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को. बिफोर दिस मूवमेंट, इस तारीख से पहले, ब्लैक पीपल जो काले लोग थे वर ऑफन इग्नोर्ड, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उन उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, फर्क होता था. बट इन द हार्लम रिनेसांस दे प्राउडली प्रेजेंटेड देयर हिस्ट्री, उन्होंने अपनी हिस्ट्री पेश की एंड कल्चर. The main purpose of this movement was to prove that African Americans are also capable, कि अफ्रीकन अमेरिकन भी इस काबिल हैं, ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट लिटरेचर, कि वो भी बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूजिक एंड आर्ट. दिस मूवमेंट आल्सो रेज्ड अवेयरनेस, इस मूवमेंट ने भी बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की अमंग अगेंस्ट रेसिज्म, नस्ल प्रस्ती के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ. मैनी फेमस राइटर्स became popular in this era, including Claude, McKay, and Langston Hughes, who wrote powerful poems about freedom, जिन्होंने आज़ादी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, ऑपरेशन जुल्म के बारे में, प्राइड के बारे में एंड होप के बारे में बड़ी पोएम्स लिखी. इन शॉर्ट, द हार्लम रेनेसांस वाज टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज इट मेड अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, क्योंकि इसने अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, मीनिंगफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, बासर बना दिया इन मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर. क्लॉड मैके को हम डिस्कस करेंगे. क्लॉड मैके was a famous poet, एक famous poet and writer of the Harlem Renaissance. He was born in जमाइका में पैदा हुआ इन 1889 and later moved to United States, फिर अमेरिका चला गया. McKay became one of the earliest and strongest voices of the black literature. ये ब्लैक लिटरेचर जो कि अमेरिका का है, इसकी एक बहुत बड़ी आवाज बना. His poetry mainly talks about racism. इसकी पोइट्री बुनियादी तौर पर रेसिज्म, नस्ल परस्ती, इंजस्टिस, नाइंसाफी, ऑपरेशन, जुल्म, स्ट्रगल, रेजिस्टेंस एंड ब्लैक प्राइड की बात करती है. ही रोट विद करेज, जिसने बड़े हौसले से लिखा. एंड शोड दैट अफ्रीकन, कि जो अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन शुड नॉट एक्सेप्ट अनफेयर ट्रीटमेंट साइलेंटली, कि उनके साथ जो बुरा सलूक होता है उन्हें खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. मैकीज राइटिंग इज पावरफुल, इसकी राइटिंग बहुत ताकतवर है. बिकॉज ही डायरेक्टली हाईलाइट्स, क्योंकि ये हाईलाइट करता है द क्रुएलिटी ऑफ रेसिज्म, नस्ल परस्ती की जो जुल्म है उसको, एंड एनकरेजेस, और हौसला अफजाई करता है द ओप्रेस्ड पीपल, दबे हुए लोगों की, टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स, के अपने हकूक के लिए उठें. वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इज
If We Must Die, uh, If We Must Die, which is a poem. ये एक poem का नाम है about resistance and bravery. In this poem, मैके motivates oppressed people. ये दबे हुए लोगों को क्या करता है? उनको मोटिवेट करता है to fight back with honor instead of dying helplessly. कि वो helplessly ना मरें बल्कि fight करें. Another important work is America, which is a poem about his mixed feeling towards America. In this poem, he explains that America gives opportunities. कि अमेरिका मौके देता है but also treats black people harshly, कि काले लोगों के साथ बुरा सलूक भी करता है. So his relationship with America is both love and pain. Claude McKay poetry is important because it gives a message of courage, dignity, and protest against injustice. अब हम डिस्कस करेंगे लैंगस्टन ह्यू को डिस्कस करेंगे. Langston Hughes was one of the most popular and influential poets of Harlem Renaissance. ये Harlem Renaissance के दौर का एक famous poet है. He was born in 1901 in the United States. Hugh is famous because he wrote in very simple language, बहुत सादा ज़बान में इसने लिखा, and express the real life of African Americans. His poetry focuses on the struggle. इसकी जो पोइट्री है वो जद्दोजहद की बात करती है of black people, their dreams, their sadness, their identity, and their hope for freedom. Hugh also used the style of jazz and blue music in his poetry, which made his poem ये जो म्यूजिक है ये उन पोइट्री को बना देता है म्यूजिकल, natural and close to ordinary people. He wanted black people. वो चाहता था कि जो काले लोग हैं to feel proud of their culture, कि वो अपनी सकाफत पर और अपने जो कल्चर है उस पर प्राउड फील करें और inferior फील ना करें. One of his famous work is The Negro. Negro Speaks of River. ये इसका फेमस वर्क है जो कि एक पोएम है अबाउट ब्लैक हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी. इन दिस पोएम ही कनेक्ट्स, वो मिला देता है अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ with ancient river, पुराने दरियाओं के साथ, showing that black people, कि जो काले लोग हैं, have a deep, rich and old history. Another famous work is Dreams, which is a poem that teaches the importance of dream. जो ख्वाबों की जो importance है उसके बारे में बताती है. In this poem, Hugh says that if dreams die, कि अगर ख्वाब टूट जाएं, life becomes meaningless and empty. Another well-known book is Harlem, also known as Dream Deferred, which is a poem. ये एक poem है about dreams that are delayed, जो जिन ख्वाबों में ताखीर हो जाती है, are ignored या जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है. In this poem, he asks what happens when a person's dreams are postponed. जब एक बंदे के ख्वाबों को मुलतवी कर दिया जाता है for too long, and he shows the emotional pain of such people. In short, Langston Hughes became the voice of common American African people. He wrote with simplicity, सादगी से इसने लिखा, honesty and strong feelings. स्टाइल हार्लम रीनेसांस. अब हम इसके स्टाइल को डिस्कस करते हैं. The style of Harlem Renaissance writers and poets was unique. Harlem Renaissance के जो राइटर थे उनका स्टाइल बड़ा यूनिक और डिफरेंट है ट्रेडिशनल लिटरेचर से. These poets wrote in a way, ऐसे तरीके से लिखा that expressed black life, जिसमें ब्लैक लोगों की लाइफ को बयान किया, ब्लैक कल्चर एंड ब्लैक आइडेंटिटी openly and proudly. Their language was usually simple, इनकी ज़बान सादा, clear and close to everyday speech. So common people, आम जो लोग हैं, could easily understand it. Many poets, especially Langston Hughes, use the rhythm of jazz and blues. इसने jazz और blues का rhythm इस्तेमाल किया in poetry, which gave it a musical and emotional touch. Harlem Renaissance poetry also include, इसकी शायरी में शामिल है strong emotions such as pain, anger, pride, hope, and confidence. Claude McKAY often used a more formal poetic structure. इसने आम शायरी का structure इस्तेमाल किया like
the sonnet form, but his message was bold. इसका पैगाम बहुत bold है and rebellious. Hugh mostly used free verse. इसने free verse use की, simple words and strong imagery. Another important part of the style was the use of symbols and powerful images to show दिखाने के लिए oppression, जुल्म को and resistance. Overall, the style of Harlem Renaissance literature was artistic, emotional, musical, and realistic, and it gave African Americans a strong literary voice. इसने अमेरिकन अफ्रीकन जो थे इनको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो अदबी आवाज थी वो दी. अब हम इनके थीम्स डिस्कस करेंगे. The Harlem Renaissance writers mainly wrote about themes. उन्होंने उन थीम्स के बारे में लिखा जो कनेक्ट करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ और उनकी स्ट्रगल को. वन मेजर थीम वाज रेसिज्म, नस्ल नस्ल परस्ती एंड डिस्क्रिमिनेशन. Because black people faced injustice, काले लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी in society, jobs, education, and daily life. Another important theme was freedom. एक और theme आज़ादी and equality बराबरी है because African Americans wanted equal rights and respect. The theme of black identity, काले लोगों की शनाख्त और उनका जो pride है उसका theme was also very common because these writers encouraged, क्योंकि इन राइटर्स ने एनकरेज किया ब्लैक लोगों को टू लव देयर कल्चर, कि वो अपने कल्चर, हिस्ट्री और रेसियल आइडेंटिटी से मोहब्बत करें. मैनी पोएट्स आल्सो रोट, बहुत सारे पोएट्स ने लिखा अबाउट रेजिस्टेंस, मज़ाहमत के बारे में, प्रोटेस्ट, एहतजाज के बारे में, शोइंग दैट ऑप्रेस्ड पीपल, कि जो दबे हुए लोग हैं, शुड नॉट रिमेन साइलेंट, इन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, अलोंग विद पेन एंड स्ट्रगल, दर्द और कोशिश के साथ. हार्लम रीनेसांस लिटरेचर, हार्लम रीनेसांस का जो अदब है, आल्सो कंटेन्स द थीम ऑफ होप. इसमें उम्मीद है, ड्रीम्स हैं, बिकॉज ब्लैक पीपल strongly believe, क्योंकि काले लोग strongly believe करते थे in a better future. Langston Hughes especially focused on dreams. इसने dreams पर focus किया, explaining that dreams give meaning to life, कि जो dreams हैं वो जिंदगी को meaning देते हैं and should never be forgotten. Another theme was culture and music because jazz, blues, and African American traditions were celebrated through poetry. In short, Harlem Renaissance themes are powerful, बड़े ताकतवर हैं because they highlight struggle, identity, pride, resistance, hope, and the desire of justice. So, student, that was our full unit, unit number 9 on modern poetry. We have discussed the unit in detail. That was on African American poets Claude McKAY and Langston Hughes. I'm sure that you have learned it in the best, easiest way. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your comments in the comment section. Thank you very much.